So welcome to Vanik Smart Class. So let us few questions again for discussion of police FI questions. So previous questions type of questions हम पाइबा similar type of questions for math and questions point of view. So let us go to the questions. Similar type of questions of any competitive examinations, and this is the priority for police SI questions. So let us see. Question number 1. If the numerator of a fraction is increased by 20% and its denominator decreased by 10%, then the fraction becomes 3 by 2. What is the value of the original fraction? So single line solution करी परिबा ए क्वेश्चंस को हमें. तो what is the procedure for this? तो let the fraction be x and y नहीं परिबा. Let us the fraction is initial x by y. And numerator is increased by 20%. x टा बढ़िबा 20% तले जो 120%. And denominator decreased by 10%. तो y is केते? That is 90%. So that ratio becomes kete hijibo, new ratio becomes 3 by 2. So this is the calculation. Then bata x by y kete. So simple calculation divide kar diyo. So x by y equal to 1 0 kati gala thi. 3 12 3 3 9 and cross multiply kar diyo. That is 9 is to 8. So this is the initial fraction. That's why option C is the right answer. जो increase करी r%, 100 plus r%, जो decrease करी r%, 100 minus r%. So सही number रा decrease कर दबो तो 120%. And that is 90%. So simple above for the calculations. So let us go to the second questions. Right. If a student multiplied a number by 6 by 11 instead of 5 by 6, so find the percentage error in the calculations. तो इटा हमके शॉर्ट ट्रिक से कैलकुलेशन करिया पड़िबो बिकॉज़ कॉमन क्वेश्चन सो कॉमन क्वेश्चन को हमें जदी नॉर्मल मेथड सॉल्व करिबा तो निश्चय टाइम नबो तो हमें शॉर्टकट कोन हे परिबो दीटा करो ताको वाला स्टूडेंट को टू मल्टीप्लाई नंबर बाय 6 by 11 instead of 5 by 6 तो ये ला रॉन्ग आंसर ये हबो करेक्ट आंसर तो स्टूडेंट को कहला टू मल्टीप्लाई नंबर दैट इज बाय 5 by 6 but he multiplied number by 6 by 11 so find the percentage of error in the calculations ता माने कोन जो नंबर डिनोमिनेटर रो समान हवा दरकार तो हम डिनोमिनेटर समान कला जो नंबर रो 6 by 11 से नंबर रो 5 by 6 तो हम जो x नौ जे x रो 6 by 11 से x रो 5 by 6 so x is the denominator तो हमें समान कर दियो डिनोमिनेटर को तो एलसीएम ले जाओ आपको हमें 6 कर दे परिबा 6 से करि परिबा आपको 6 करि परिबा आपको 11 कर दियो बतन 11 हे गला तो ये हला दैट इज शॉर्ट ट्रिक्स फॉर दिस ता मान तक वाला 66 को 36 रे मल्टीप्लाई करे पई बट से मल्टीप्लाई कर दला दैट इज गोटे नंबर संगे 66 को दैट इज बाकी आंसर 55 पाइला गोटे नंबर को 66 रो नंबर रे 6 by 11 मल्टीप्लाई कले दैट इज 36 पाया कथा पाई छी बट पाई छी 55 पाया कथा 55 इट इज द राइट आंसर करेक्ट इट इज द रॉन्ग आंसर सो क्वेश्चन बता जी फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशंस तो राइट आंसर शुड बी 55 एंड रॉन्ग आंसर गला 36 तले एरर केते हला माइनस करो तो एरर परसेंटेज पदारची व्हाट इज एरर परसेंटेज दैट इज डिफरेंस कता बताले 55 माइनस 36 55 माइनस 36 बाय इनिशियल नंबर ऑफ 55 into 100 so difference is coming 19 तो 19 by 55 into 100 तो 5 रे काट दियो 5 काट ले 11 5 काट ले 20 तो 380 by 11 परसेंटेज तो अप्रोक्स केता होसी 11 3 33 50 11 44 36 whole 6 by 11 percentage that's why option is second option B तो हम x ने करि परथांते बट x अपिका कैलकुलेशन इजी हिजबो तो 36 बाहर कर दिसे बट 66 रे हमको 55 दरकार तनो एरर आसीबो 55 माइनस 36 बाय 55 100 तो हमको स्टेप को ओमिशन करिवार अछि दैट्स व्हाई सिंगल लाइन सॉल्यूशन करि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा क्वेश्चन नंबर 3
length, breadth and height of a room in the shape of a cuboid are increased by 10%, 20%, 25% respectively. So find the percentage change in the volume of the cuboid. Successive जाई परिबो सर्च मेथड सक्सेसिव तो क्यूब रो वॉल्यूम फार्मूला हम जानि छे लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट तो लेंथ बढ़ी जाउची 10% ऑल आर इंक्रीज्ड तो लेंथ बढ़ला लेंथ 10 थिला 11 हे गला रेशियो एंड ब्रेड्थ 20% इंक्रीज अछि तो 5 थिला 6 हे गला एंड हाइट आल्सो इंक्रीजेस 20% सो 5 25% 4 थिला 5 हे गला तो मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई कले कैंसिल कर दिया लेफ्ट राइट साइड थी कर दिया ठीक कैंसिल हे गला 5 5 ए 2 कटि जीवो 2 3 जार 2 2 जार तो लेफ्ट साइड वाला 20 यूनिट्स इनिशियली वॉल्यूम थला 20 बतन वाला 33 so that is increase तो पचाची फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम तो परसेंटेज केता हो इंक्रीज हला केते 11 13 तो परसेंटेज इंक्रीज दैट इज इक्वल टू 13 by 20 into 100 so that answer is coming 65%. So option is coming third option. Next question is question number 4. Easy thila. Everyone doing this procedure. Okay, let's see it. Next questions. First question पढ़ो. A bought an article and spent rupees 515 on its repairs. He then sold it to B at a profit of 20%. A B को सेल कला 20% प्रॉफिट रे B sold to C at a loss of 10% and C finally sold it for rupees 2808 at a profit of 30%. ता माने A B को देछि B C को देछि C D को देछि D रे वैल्यू देछि A रे वैल्यू पचारछि तो इट इज आल्सो सक्सेसिव पगी द सक्सेसिव तो A सेल करछि A to B %20 प्रॉफिट 20% वाला 5 थिला 6 वाला B sell to C loss of 10% 10 थिला 9 वाला and C sold to D gain of 30% C to D B to C A to B 30% gain 10 थिला 13 तला आमे रेशियो कहार कार पाइबा the ratio between the cost price of A and cost price of D first and last पाइबा तो लास्ट दिया ही फर्स्ट पचार बेटर अब किछि कटु जी काटी दियो फर्स्ट दुई रे कटु 2 3 6 2 5 10 तो 25 into 10 तो ए रो कॉस्ट प्राइस थला 250 पार्ट एंड फाइनली डी रो एला रिलेशन बिटवीन ए टू डी तो डी पाइला केते 13,117 into 3 सेम थाओ 17 3 51 117 into 3 एति ये सब रेशियो पाइला में एति पार्ट एंड दिस इज पार्ट कार वैल्यू दिया जी C finally sold rupees 2808 at a profit of 30%. तो what is the cost price of D? ये वाला cost price of D 2808 ताले कोई जी 117 into 3 पार्ट that is equal to 2808 वन पार्ट पाई जीवा ए रो पचारची ए रो 250 पार्ट बट ए खर्च करची केते 515 तो 515 ता मिसी गादर अछि दैट्स व्हाई हम 515 माइनस करबा ताले देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पाइबा ताले फर्स्ट बार करो व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ए इंक्लूडिंग दैट इज रिपेयर खर्च केता हो ताले 117 into 3 पार्ट जदी 2808 वन पार्ट केते वैल्यू डिवाइड कर दियो 3 कटिले 13 करची 13 9 117 13 26 27 28 20 13 के 13 1378 9 कट जीवो 18 36 3 कटला 8 तो वन पार्ट इक्वल टू 8 ताले 250 पार्ट ए रो प्राइस 250 into 8 ताले 2000 rupees that is A रो खर्च बा A रो कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग द 515 जोडा को खर्च करची इंक्लूडिंग स्पेंट so that is 515 that's why पचारची how much did A pay for the article ताले A paid
2000 माइनस 515 1450 आंसर दैट्स ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर सही नहीं करि परिबा किछि पिला सही नहीं करिवे नो प्रॉब्लम बट सक्सेस भी पढ़ी पारिबो इजी हबो छोट छोट नंबर आसीबो तो स्मॉल नंबर कैलकुलेशन कले इजी हबो कैलकुलेशन सो बेटर हबो गो बाय द सक्सेसिव तो आंसर इज लाइक दिस नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 5 Question number 5. A sum of money invested at simple interest triples itself in 17 years at simple interest. Find how many years will it become 17 times itself at the same rate of interest. तो हमें rate of interest भाग करी परिबा एठी then पचारची at how many times time पचारची so rate percent भाग करी time भाग करी परिबा but again time takes हमको one step रे करिवार अछि so what is the shortcut for this let us see it is also it is interesting questions तो single line solution करिबा तो केन करि परिबा a sum of money invested at simple interest तेनो जदी triples कहिजी triples in 17 years SI रे 3 times in 17 years ताले constant term भाग करो तो ये सब क्वेश्चन से हम पकेबा constant term into n minus 1 ऐसा शॉर्टकट है so that आम क्वेश्चंस को इजीली हैंडल करि परिबा rather than the concept तो concept को अवॉइड करि परिबा तो let us see how this method is more effective so 3 times जदी 17 वर्ष रहउची ताले n minus 1 वाला 2 2 रे केते मल्टीप्लाई करे 17 हबो ना 17/2 तो ये हला कांस्टेंट टर्म तो 17/2 इज द कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट टर्म को n minus 1 रे मल्टीप्लाई करिवो वर्तमान बजारती फाइंड हाउ मेनी इयर्स बिकम 17 टाइम्स तो 17 टाइम्स हबो 17 minus 1 16 तो 16 into 17/2 जोरे काटि दियो 8 8 7 56 8 के 8 5 13 136 years so answer is coming C without finding that percent within then time directly हम पाई जिबा तो time is coming 136 years so concept is constant term into n minus 1 years बहुत शॉर्टकट हबो than the concept next question jiba question number 6 a boat goes 140 km upstream in 28 hours and distance of 203 km downstream in 29 hours so find the speed of the boat in still water तला हम जाने formula speed water रे speed of boat in still water that is equal to half of speed of boat half of ds plus us downstream speed plus upstream speed तो ये वाला that is formula for speed of boat speed of water of minus change of sign तो हम बजारची what is the speed of boat in still water तो answer should be half of ds plus us तो हम कौन दरकार ds दरकार and us दरकार ds दिए already तो ds बा करो डाउनस्ट्रीम जाउची 203 किलोमीटर in 29 hours so 203 by 29 7 and upstream speed केता हो ना 140 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाउची 28 घंटा रे तो अपस्ट्रीम स्पीड 140 by 28 5 तो ds हला 7 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम हला 5 किलोमीटर पर आवर ताले स्पीड ऑफ बोट पचारची a equal to half of 7 plus 5 12 12 by 2 that is 6 so 6 kilometer per hour is the boat raw speed so direct formula based questions easy jibo next question jiba question number 7
प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन देखो ये वॉच डीलर सेल्स वॉच at rupees 45,220 after two successive discounts of 15% and 20% respectively. What is the mark price? Two discount is given. एटा भी successive नहीं परिबा कारण successive रो utilization in profit loss important, percentage important. तो एटा हम नहीं परिबा तेणु दीटा सक्सेसिव डिस्काउंट अच्छी 15% 20% हला पर सेलिंग हेची डीलर सेल्स 45,200 सो व्हाट इज द मार्क प्राइस तर बगा सक्सेसिव फर्स्ट इज गिवन 15% रेशियो कर दियो तो 15% रेशियो वाला 3/20 तो 20 थिला 3 माइनस कर दियो 17 एंड 20% इज सेकंड डिस्काउंट 20% 1/5 तो 5 थिला 4 तो क्रॉस वाइज काटी परिबा 5 तारे मार्क प्राइस 25 पार्ट थिले सेलिंग प्राइस 17 पार्ट हेगला दिस द रेशियो बिटवीन मार्क प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस देइची 17 पार्ट हमके देइची ना 45,220 तो 17 पार्ट दियाई 25 पार्ट पचारची फड़ी दम मार्क प्राइस पचारची 17 पार्ट डिवाइड कर दियो तो 17 काटले 17 दुने 34 34 44 1112 1700 102 102 1700 2660 ताले वन पार्ट यदि 2660 ताले मार्क प्राइस दैट इज इक्वल टू 25 पार्ट तो 25 into 1 2660 0 2500 150 150 1500 165 25 दुने 50 60 66 तो आंसर is 66500 this is the answer तो ऑप्शन डी इज द आंसर तो सक्सेसिव पकले सहज हबो नंबर छोटो आसीबो कैलकुलेशन इजी हबो सक्सेसिव रो मेन लॉजिक हला जेतु नंबर छोटो अछि कैलकुलेशन विल बी फास्ट एंड एरर फ्री कैलकुलेशंस कैंसिल करियो इजी हबो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 8 A train started from station A and proceed towards station B at a speed of 208 km per hour. 45 minutes later, another train started from station B. Opposite direction आसुंदी ताले two distance अछि station A station B. तो first train जाउची 208 km per hour. And 45 minutes later another train start करची towards station A opposite direction आसी at 25 km per hour. Distance बहुत difference अछि let us see कौन होउछ. If the distance between the two stations is 855 kilometers whole distance ala 855 kilometers ताले at what distance from station A will the train meet A side रो को डिस्टेंस रे दैट इज ट्रेन मीट करिवो तो क्वेश्चन फ्रॉम रिलेटिव स्पीड तो रिलेटिव स्पीड रे हम कोन करबा ना टाइम को समान करबा तो जेतु 45 मिनिट्स लेटर स्टार्ट कर जेटा 45 मिनिट्स लेटर तले 45 मिनिट्स रे केते ट्रैवल कर छी ए भाग कर दियो तो 45 मिनिट्स 3/4 आवर तले एक ट्रैवल करथिबो 208 into 3/4 किलोमीटर सारे कर दियो 55 20 4 8 3 दुने 6 3 5 15 एती ट्रैवल कर दै छी सपोज 156 किलोमीटर ट्रैवल कर छी त रिमेनिंग डिस्टेंस भाग करो तो ये डिस्टेंस कितना हो 855 माइनस 156 तो 15 6 गले 9 एंड दैट इज 14 5 गले 9 7 रे गला 6 और हला 699 किलोमीटर तो ये ला रिमेनिंग डिस्टेंस तक ये ला चेंजिंग डिस्टेंस तो 699 किलोमीटर को रिलेटिव स्पीड रे कवर करबे केते टाइम में टू मीट तो टाइम टू मीट दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड 699 बाय धीरा स्पीड मिसी जीव बिकॉज़ ऑपोजिट डायरेक्शन 208 प्लस 25 208 प्लस 25 8 5 13 2 के 3 233 तो काटले कटि जाउछ 3 3 9 3 3 3 आवर राइट सो 3 आवर पर मीट करबे हम आंसर पाइले 3 आवर पर मीट करिवे समय रे एठी मीट करिवे बट क्वेश्चन को बदरची
at what distance from station A the train meet एटी ए डिस्टेंस पचार व्हाट दिस डिस्टेंस ताले ए कवर करछि केते बाटा बाहर कर दियो ए टू ए पंदो ताले एटी कवर करछि 3/4 आवर ए टू ए पंदो 3/4 आवर ए टू ए पंदला 3 आवर ताले 3 + 3 4 आवर केते बाटा ट्रैवल करथिबो ए सो दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए साइड फ्रॉम दिस मीटिंग पॉइंट तबा कर दियो द डिस्टेंस covered by A in 3 whole 3/4 hour 4 3 12 3 15/4 घंटा that is equal to 15/4 into its speed तो स्पीड केते अछि 208 4 कर दियो 4 5 20 4 3 8 तो 15 into 52 तो आंसर केते हो 15 दूनी 30 15 5 75 3 78 780 किलोमीटर दैट इज डिस्टेंस ऑफ राइट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन ताले ये हला जो टाइम रे मीट करिवे से टाइम रु ए रो डिस्टेंस 780 नले जे बी पुट भाग करथांते माइनस करते भी सहज होबो बट डायरेक्ट हम पाइ जिबा जे कोन सी डायरेक्शन भाग करि परिबो तो यू कैन गेट द आंसर तो कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड टाइम को समान करिवो टाइम को समान कले दैट इज मीटिंग टाइम पाइबो दैट इज इंपोर्टेंट टाइम मस्ट बी इक्वल बिकॉज़ 45 मिनट्स लेटर that is B started. Next question jiba question number 9. A number when divided by 645 leaves a remainder of 40. So what is the remainder when the same number divided by 43? Suppose this is a number. When this number divided by 645 leaves remainder 40. So question goes, what is the remainder when the same number divided by 43? Instead of 645, यदि 43 divide होबो ताले remainder कोन? तो remainder तो less अछि 40 less अछि than 43 तो जदि 43 645 को divide करूथिबो ताले remainder सेति आसीबो 40 आसीबो बट 43 divide कर देखो 645 को 43 1 jar 43 4 minus 3 1 6 minus 4 2 215 and 5 3 15 कटि जाउ राइट ताल जदी 43 डिवाइड करछि 645 की ताले 43 डिवाइड करियो 40 को ताले अगेन से 40 आसीबो दैट इज रिमाइंडर दैट्स व्हाई आंसर इज कमिंग 40 डिविडेंड मोर रिमाइंडर लेस तो डिविडेंड इटसेल्फ रिमाइंडर सेम रिमाइंडर इज द रिमाइंडर थला से रिमाइंडर जदी एटा लेस थांदा 40 ru less further divide करथांदा that answer is coming 40 right next question जिबा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन दिला क्वेश्चन नंबर 10 but normally question आसे that is अलगा आसे 40 ru अधिक 43 ru अधिक थाई पारे जो क्वेश्चन आसे नॉर्मली 43 ru अधिक थाए तो हम फर्दर डिवाइड करू बट इट क्वेश्चंस सी 40 अछि सो दैट्स आंसर 40 क्वेश्चन नंबर 10 sum of two digits is 12 sum of their reciprocals is 4/9 then find the larger of these two digits dita number achi digits कहिछि sum of two digits is 12 तले हम कहि परिबा a plus b यदि digit हुए तले a plus b equal to 12 and second हेछि sum of the reciprocals is 4/9 तने 1 by a plus 1 by b that is equal to 4/9 आगो दि सम करिबा कता बताले ना a plus b by b that is equal to 4/9 तो पटा सम अछि सम वाली दिया छि 12 ताले 4 पार्ट जदि 12 हला ताले 9 पार्ट ता कता हो 27 3 रे मल्टीप्लाई तले एठा में डिराइव करि परिबा a plus b जदि 12 हबो हिट एंड ट्रायल कांसेप्ट रे a b पाई जाय परिबा बिकॉज़ प्रोडक्ट दिया छि एंड a plus b दिया छि तो हिट एंड ट्रायल पकेत आंसर आसी जिवो बुझाछि व्हाट इज द लार्जर ऑफ दिस नंबर ताले a plus b 12 हले कोन कोन हे परिबो a b जे 27 हला कोन कोन हे परिबो फैक्टर 9 into 3 हे परिबो गोटे फैक्टर हे परिबो एंड चेकअप कर दियो 9 3 12 भी सैटिस्फाई करछि तर बिगर नंबर इज 9 एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3 तो बुझाछि व्हाट इज द बिगर नंबर दैट्स आंसर इज कमिंग 9 Next question is about question number 11. AP series questions. Find
the sum of this is find. Find the sum of the first 155 terms of an AP whose first term and the third term are 165 and 175. तो sum of AP terms हम जानते हैं फॉर्मूला कौन, sum of AP terms SN is equal to 2A n by 2. First is n by 2. n by 2 whole into 2A plus n minus 1 into D. तो ये वाला that is formula for sum of the AP series. तमें से formula पकई परिबा. तो first 155 terms of an AP, दूसरे that is first term दिया ही 165 and third term दिया 175. तो भाग कर दियो what is A, what is D. A D पाइले हम पाई जीवा. तो A D भाग कर दियो. तो first term दिया 165. तब A दिया 165 and third term दिया 175. Third term माने A plus 2D that is 175. ताले 2D कितना बताले 10 and D value कितना बताले 5. ताले D value पाइले ये पाई गले. ताले what is sum of the first 155 terms. ताले बगी दे formula. तो sum of 155 terms, so that is equal to sum n है ला 155 2 whole into 2A. 2A is first term 165 into 2 into 165 plus n minus 1 ala 155 minus 1 into common difference is 5. So you have answer. So that is equal to 155 by 2. मजरा सॉल्व कर दियो. 2 पंचा 10 सोल्व देने 32 1 33 330 plus 154. तो 154 into 5 5 20 15 पंचा 75 2 77. So that is equal to 155 by 2 bracket sum करते हैं वो 0 7 3 10 7 3 10 के 1100 2 रे काट दियो 2 पंचा 10 बेटर अब ताको मल्टीप्लाई कर दियो इज जब मल्टीप्लिकेशन. तो 155 इंटू ये लगते 1100. तो 1100 को 155 मल्टीप्लाई कले डबल जीरो लगी जीवो. 11 मल्टीप्लाई कले 5 5 5 10 5 1 6 1 7 170 बाई 2 कर दियो. रेजिस्टेंस 16 1 17 2 पंचा 10 2 दूनी 4 250 85,250. राइट ऑप्शन बी. डायरेक्ट फॉर्मूला के ब्रो Sn equal to n by 2 whole into 2A plus n minus 1 into D. N is given, A is given, then easily you can put it. Next question jiba, question number 12. Rupees 1066 is divided among 2 men and 6 women and 8 boys. 2 men, 6 women and 8 boys. Doubling age. What I got to do? Rupees 1066 divided among 2 men, 6 women and 8 boys, so that the share of a man, a woman and a boy are in the ratio 3:2:1. Then how much does a man get in rupees? ताले रेशियो ला 3:2:1. मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ पर्सन संगे डिवाइड कर दबा. ताले यदि मैन वोमेन बाय बॉयज, मैन वोमेन बाय बॉयज रेशियो दियला 3:2:1. नंबर ऑफ नंबर्स मल्टीप्लाई कर दियो. मेन 2 जन अछंती, वोमेन 6 जन अछंती एंड बॉयज 8 जन अछंती. ताले टोटल रेशियो केता बताले ना 2 into 3 6 रेशियो 2 into 6 12 रेशियो 8 1 8. तो काट दियो अगेन 2 3 6 212 208. तो ये रेशियो डिवाइड हम
एंड टोटल मनी केते पाइबे ना दैट इज 1660 इक्वेट कर दियो बतन 6 4 10 3 13 तो 13 पार्ट जदी हला 1660 तले वन पार्ट वैल्यू केते ना 13 टा 104 13 26 वन पार्ट 82 तो जदी वन पार्ट 82 तो दैट इज हाउ डज ए मैन गेट इट तो मैन टोटल 2 मैन केते पाइबे ना दैट इज 3 पार्ट तो 2 मैन पाइबे that is equal to 82 into 2 82 into 3 तारे 82 into 3 जदि टोटल 2 मैन पाइबे तारे ए मैन केते पाइबो तो 1 मैन पाइबो 82 into 3 by 2 तुरे कर दियो 41 तो 41 into 3 3 के 3 312 तो ये मैन पाइबो 123 टंका दैट्स व्हाई ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन डी इज द आंसर तेनो नंबर ऑफ रेशियो दिया थी मैन वुमेन बॉय नंबर ऑफ पर्सन्स मल्टीप्लाई कर दबा डिवाइड कर दबो देन दैट इज 1 बॉय 1 मैन जहां पर जाती हो यू कैन गेट द आंसर सिंपल क्वेश्चन थिला रेशियो प्रोपोर्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 Akbar left a will of rupees 44,100 for his two sons whose age are 14 and 15 years. They must get equal amounts when they are 17 years and year किसी mistake हला ठीक है when they get 17 years at 10% compound interest okay 10% compound interest रे समान अमाउंट पाइबे क्वेश्चन देखो जन को 14 वर्ष जन को 15 वर्ष तो 17 वर्ष आ पई फर्स्ट पर्सन को बा अकबर को लागिवो फर्स्ट सन को लागिवो केते दैट इज 3 वर्ष एंड सेकंड सन लागिवो 2 वर्ष फर्स्ट सन रो 3 वर्ष पर जति का अमाउंट हबो सेकंड सन रो 2 वर्ष पर जति का अमाउंट हबो तला अमाउंट को इक्वेट कर दे परिबो रेट परसेंट 10% अछि तो हम जानि छै 11/10 1 plus rate percent तला बाका तो 1 plus rate percent फर्स्ट 1 plus rate percentage फार्मूला ला 11/10 सपोज फर्स्ट सन को ये दिया छै सेकंड सन को बी दिया छै दीटा अमाउंट मिसी की 44,100 टका दिया छै एंड ए को 14 वर्ष एंड बी को 15 वर्ष तले ये 17 वर्ष हेले दीटा का समान अमाउंट पाइबे त कहि परिबा ये 3 वर्ष ग्रोथ हबो एडा 2 वर्ष ग्रोथ ए प्रिंसिपल अमाउंट ए जो फर्स्ट सन दिया छी दिस विल बी ग्रोन 3 years and second amount that is given to b second son that will be in 2 years and 2 years ପରେ तार 3 years ପରେ amount equal हबो तले amount equal करो amount formula 1 plus 30% तले a रो 11/10 to the power 3 should be equal to b रो 11/10 to the power 2 तो गोटे पावर कटि जो तले a by b रेशियो पाई जीवा 10/11 उल्टा आई जो तारे 11 पार्ट 21 पार्ट दिया हमको तो 21 पार्ट हमको दिया 144100 तो 1 पार्ट केता हबो 21 रो स्क्वायर 441 2100 फाइंड द प्रेजेंट शेयर ऑफ यंगर सन तो यंगर सन की अछि आदरे छोटो छोटो वाला दैट इज ए बिकॉज़ 3 वर्ष जोटा का लेस अछि ताले ए पाइबो 10 पार्ट तो 10 into 21 that is 21,000 so option A is the answer simple ratio compound interest ro but without much more calculations easily पाई जिबा 10% थाओ बा 20% थाओ बा 15% थाओ 1 plus rate percent भाग कर दबो and A and B different sum नै जिबो but यदि आकु करिवो 44100 ताकु जदि करिवो x minus 44100 that calculation time takes but ratio करले calculation easy हो तो आंसर इज कमिंग 21000 नेक्स्ट क्वेश्चंस 14 a box containing the denominations of 50 paisa coins 10 rupee coins 50 paisa coins and 10 rupee coins amounts to 1840
there are equal number of coins in the denominations, find the total number of 10 rupee coins in the box. It agote thila bode. Let us check up the question. Question number 14. 50 paisa coins, 1 rupee coins ଅଛି. એટલે કે 1 rupee coins. And 10 rupee coins. 1840. Then find this. So 3 denomination ଅଛି. ଗୋଟେ ହେଲା 50 paisa, ଗୋଟେ ହେଲା rupees 1, ଗୋଟେ ହେଲା 10 rupees, rupees 10. Number ଦେଇଛି 1:1:1 equal number ଅଛି. So 1:1:1. 3 equal numbers of coins, all denominations equal number ଅଛି. ତ value ରେ convert କର କାରଣ 1840 value ଦେଇଛି. ତ value ratio କ'ଣ ହବ? 50 पैसा ଯଦି ଗୋଟେ ଅଛି ତାହେଲେ that is equal to 0.5 বা 1.5 rupees କରିଦବା. 0.5 କରିଦଉଛି better. 0.5 rupees सब rupees कन्वर्ट करो. रेशियो rupees 1 भी गोटे अच्छी टंकाटे, rupees 10 भी टंकाटे अच्छी 10 टंका मिसई दे वर्तमान 11.5 पार्ट इक्वल टू 1840. तो 1 पार्ट वैल्यू 1840 देखो 1840 गोटे 0 पकई दउची 2215 23 5000 23 8000 5 काटले 160 प्रत्येक 160 लेखा अच्छी. तो 160 160 160 हम पचार व्हाट इज द टोटल नंबर 10 रुपी कॉइन्स. तो वैल्यू के बताले 10 रुपीज रो वैल्यू हम 10 इंटू 160 ताको 10 डिवाइड कले. सो दैट इज इक्वल टू 160. तो जदि रुपीज 10 हम 160 ताले रुपीज 1 भी 160 एंड रुपीज 5 आल्सो 160. तो इज एच का भी 160. नेक्स्ट वन नंबर 15. Using the data from the graph, answer the questions below. Find the total number of males from sector Q and females from sector P together. Males from sector P. Male ratio देइछ. Second ratio males female ratio देइछ 5:9. It is ratio. 5:9 सब अच्छी ratio अछि. Okay, so first find out number of males from Q. Males from sector Q and females from sector P. Q रे अछन 750 टोटल, Q रे अछन 8:7. तो टोटल मेल्स हबो 15 पार्ट दे 750 Q रे मेल्स. थोड़ा वर्बल कैलकुलेशन करि परिबा. 750 इन द रेशियो 8 7 15 15 पार्ट 750. तो 1 पार्ट हम केते 15 50 75 50 ताले मेल अछंती दैट इज 50 into 8 50 into 8 दैट इज इक्वल टू 400. P रे find the number of males from sector Q and females from sector P. Females P रे अछन 700 5 9 14 पार्ट बाय 14 कर दियो 14 50 70 50 50 into females 50 59. तो 50 into 9
450 टोटल सम पचारची तला 850 इज द आंसर तो ऑप्शन ई 450 सेकंड ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन कौन so direction देची 16 17 study the following bar chart the bar chart presents the hair color manufacturing company that produces 5 different hair colors the sales of 3 5 hair colors is given in lakhs of number of packs during 15 and 18 are shown in the bar chart okay the question ta kon देते पढ़िया पढ़ियो what is the ratio of the sales of burgundy colors in 2015 to sales of caramel color in 2018 right what is the ratio of the sales of burgundy colors in Just 1 minute. Let us, some technical snag is there. हाँ ठीक है सो हेल्ड अप ହେଇଗଲା ଟିକେ ହେଲ୍ଡ ଅପ୍ ହେଇଗଲା ଆସୁନି ତାର ଯୋଉ ଇଟା ଟିକେ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଲଗେନ ତ ଓହୋ कि नहीं नगेन नहीं कि आस ठीक आस हेल्ड अप ହେଇଗଲା ହେଲ୍ଡ ଅପ୍ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ସେଟା ମୋର ଲାଗିବ ମୋରଟା ଲାଗିବ ମୋର ଲ୍ୟାପଟପଟା ଲାଗିବ ହଁ ଏଇଠିକି ଆସ ଏଇଠି ଡେସ୍କ ନେଇଯିବୁ
এটা আনলো লেখাটা কোড়া যাবে আসলা একদম মজরে মজরে কোড়া নাই এটা আসলে কোড়া আসবে কোড়া এটি কোটি এটা আসলে কেমনি নথলা না এটা এরকম হেଲେ ଆସିବ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସେଠି ଅଛି ତା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଇଏରେ ଅଛି ତା ଚାର୍ଜରଟା ଅଛି ଲଗେଇଦେବ କୋଉଠି ଲଗେଇବ okay let us see so cells of hair in 2018 is what percent more than cells of dark in that is साइडनेस लो चलो साइडनेस तଳ कर दे हां ठीक है चलो the cells of purple hair color 18 is what percent more than cells of dark brown in the same year so I think 16 टा skip हो गला तो let us see 16 first 16 right but the ratio of the cells of burgundy color in 15 ratio करो तो burgundy in 15 15 टा कोडा अछि तो 15 I think 30 is so 30 by for the ratio of the cells of burgundy color in 15 to the cells of caramel color in 18 caramel in 18 45 simple ratio अछि 15 3 30 15 3 45 ratio 2:3 it option third option थिला right question number 17 the cells of purple hair color in the year 18 purple is 18.3 is what percent more than cells of dark brown same year dark brown in 1820 by 20 by 20 into 100 difference वाला 15 तो 20 पंचा 100 15 पंचा 75% that's why option is option A next question 17 18 simplify the following expression simplification अछि so 3 whole 1 by 5 of 2 whole 3 by 4 off अछि first off solve करिवो first off solve करिवो of 2 whole 3 by 4 8 division 11 by 3 plus 2 whole 1 by 5 division wrong अछि तो हम एटा ऑब्जर्व करो क्वेश्चन में लिखि दउ जेठी 3 whole 1 by 5 of 2 whole 3 by 4 division 11 by 3 plus bracket भीतर अछि 2 whole 1 by 5 division 1 whole 2 by 5 of 3 whole 1 by 7 minus 2 whole 1 by 3 yes এটা minus तो ऑब्जर्व करो बतान फास्ट ऑफ सॉल्व कर एटा सॉल्व करियो फास्ट एरा 5 3 15 1 16 by 5 into 4 जन 8 3 11 by 4 एटा ब्रैकेट रखो फास्ट डिवीजन 11 by 3 प्लस फास्ट ब्रैकेट सॉल्व करियो ब्रैकेट भीतर ऑफ करियो फास्ट 5 दिन 10 11 by 5 डिवीजन 5 के 5 2 7 by 5 into 7 3 21 1 22 तक 7 फास्ट एटा सॉल्व करियो and minus 2 whole 1 by 3 करियो so that is equal to तो सॉल्व कले 4 16 44 by 5 into 3 by 11 या फास्ट सॉल्व करिबा प्लस 11 by 5
इंटू आपको सॉल्व कले 7 7 कटि जीवो 22 से तो 5 उल्टा हो जीवो 5 बाय 22 माइनस 21 बाय 3 तो दैट इज इक्वल टू 11 44 तो 4 3 12 बाय 5 प्लस 11 दूने 22 5 कटि जीवो 1 बाय 2 माइनस 21 बाय 3 मिक्स कर दियो 5 दूने 10 11 12 2 बाय 5 प्लस 1 बाय 2 माइनस 3 7 21 कटि गला 7 ताले 7 माइनस 80 3 whole 1 by 5 of 2 whole 3 by 4 division 11 by 3 plus 2 whole 1 by 5 division 1 whole 2 by 5 of 3 whole 1 by 7 minus 2 whole 1 by 3 ठीक अच्छी 5 3 15 एक 16 by 5 इंटू 4 दिन 8 3 11 by 4 ठीक अच्छी डिवीजन 11 by 3 प्लस 11 by 5 डिवीजन 5 के 5 2 7 by 5 इंटू 7 3 21 एक 22 तो 7 माइनस ओ सॉरी 2 whole 1 by 3 दिस इज इट इज 2 whole 1 by 3 तने 3 दुनी 6 एक 7 by 3 दिस इज 7 by 3 दिस 7 by 3 दिस इज 7 by 3 तो इट लिख परिबो 3 दुनी 6 whole 1 by 3 then माइनस करो सो 2 2 कटि जीवो एलसीएम जीवो 30 6 दुने 12 प्लस 15 माइनस 10 15 10 गला 5 17 बाय 30 ऑप्शन नहीं इतने 6 1 7 बाय 3 7 बाय 3 ठीक अच्छे माइनस 5 5 5 से 1 बाय 2 5 बाय 22 ठीक अच्छे तो कैलकुलेशंस देखो कोड भूल होची 12 बाय 5 1 बाय 2 7 बाय 3 3 दुने 6 1 7 1 बाय 3 2 2 कटि जीवो 2 ए 5 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 हुए एलसीएम 30 हेबो 5 30 12 15 के 15 माइनस 10 हेले 10 के 10 17 बाय 30 अगेन चेक आउट कैलकुलेशन 3 होल 1 बाय 5 ऑफ अच्छी तो 5 3 15 1 16 बाय 5 इंटू 4 दुने 8 3 11 बाय 4 डिवीजन 11 बाय 3 प्लस 5 दुने 10 11 बाय 5 डिवीजन 5 दुने 5 के 5 2 7 बाय 5 ऑफ 7 3 21 के 22 बाय 7 माइनस 2 होल 1 बाय 3 3 दुने 6 7 ठीक अच्छी ये कटिगला 4 4 16 11 44 बाय 5 ठीक अच्छी इंटू 3 बाय 11 भी ठीक अच्छी प्लस 11 बाय 5 ठीक अच्छी इंटू उल्टा ही जीवो 22 से 5 ला 5 22 गला ठीक अच्छी माइनस 7 बाय 3 तो ये लगते 4 3 12 बाय 5 ठीक अच्छी प्लस 5 कटिगला 11 दुने 22 1 बाय 2 ठीक अच्छी माइनस 7 बाय 3 ठीक अच्छी ताले 5 दुने 10 2 12 2 2 होल 2 ए 5 ठीक अच्छी प्लस 1 बाय 2 माइनस 3 दुने 6 1 7 बाय 3 भी ठीक अच्छी ताले प्लस 2 माइनस 2 कटि गला 2 ए 5 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 ठीक अच्छी एलसीएम 30 कैलकुलेशन ठीक अच्छी सो मे बी कुछ क्वेश्चंस एपट सब थाई पारे रॉन्ग आछि बिकॉज़ 17 बाय 30 आछि हम क्वेश्चन अनुसार बट आंसर अछि 1 होल 1 बाय 6 देखिए पड़ियो नंबर ठीक अछि ना भूल अछि अदरवाइज कैलकुलेशन ठीक अछि ए टाइप रो क्वेश्चंस तो फास्ट ऑफ सॉल्व होबो तो आमे जे ऑफ सॉल्व करे फास्ट ए ऑफ सॉल्व फास्ट करिवो ए ऑफ सेकंड सॉल्व करिवो देन दैट इज नंबर अछि ताबे डिवीजन सॉल्व करिवो
तेणु डिविजन पूर्व ऑफ सॉल्व हम सो ये ऑफ फास्ट सॉल्व है ये ऑफ सेकंड सॉल्व हम तापर डिविजन करिवो तापर दैट इज प्लस माइनस करि परिबो तो कैलकुलेशन ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा किछि नंबर एपट सॉर्ट थाई पारे नंबर 19 in an election between two candidates one got 60% of the total valid votes 25% of the votes were invalid if the total number of votes was 15,000 find the number of valid votes that other candidate got so in equal calculation easy hobo so take 100 suppose total voters tele 100 and 25% votes were invalid 25 हेगला invalid valid केता बताले 75 पार्ट टू पार्ट डिवाइड होला अगेन वन गॉट 60% ऑफ टोटल वैल्यू votes तो ये 60% पाइला 75 रो 60% दैट इज 3/4 ताले अदर कैंडिडेट पाइबो 75 रो 25% इज 1/4 तो क्वेश्चन को पचार छी इफ द टोटल नंबर ऑफ votes इज 15000 ताले 100 पार्ट ता मु देई छी 15000 ताले वन पार्ट केता हबो 150 ताले पचार छी व्हाट इज द valid votes that other candidate got eta pachach so that is equal to 75 into 1/4 into eti part one part value 150 into 150 3/5 सर 5 काटो 30 तो टोटल केता बताले अदर कैंडिडेट गॉट इट 75 into 30 0 3 5 15 3 7 21 1 22 कैलकुलेशन भूल अछि तो ये अमेंड कर दोची 75 रो जदी वन गॉट 60% तो अदर गॉट 40% 2/5 it is 2/5 कर दियो तो 2250 into 2 कर दिया खाली 0 2 5 10 22 3 44 1 45 ऑप्शन बी अछि गोटे 60% आउटे पाइबो 40% 40% 2/5 तो हम यदि वन पार्ट पाइले 150 ताले 75 पार्ट इन 75 रो 2/5 पार्ट केते 75 into 2/5 into that is 150 नेक्स्ट कोन देखो 20 Right. Time and work questions. P can complete a work in 12 days, working 8 hours a day. Q can complete the same work in 8 days, working 10 hours a day. If both P and Q work together, working 8 hours a day, in how many days can they complete the work? Ratio kariba again. First worker efficiency ratio, P and Q efficiency ratio, then find work, then how many days can they complete work together? How many days they माने complete combined अछि P and Q मिसिकरी तले efficiency भाग करो P 12 days रे 8 hours काम करछि 12 into 8 that is equal to Q same work in 8 days working 10 hours तले 8 cancel 2 6 jar 2 5 jar तले P by Q रे efficiency ratio केता हबो ना 5/6 जे कौन से अमाउंट वर्क भाग कर दे 80 पकई दियो तो वर्क केता बताले P रो 5 पकई दियो 5 60 60 into 8 तब करिवे P plus Q के दिन रे तो by P plus Q कर दियो 511 If both P and Q work together working 8 hours per day एटा गोटे घंटा काम कले 8 घंटा काम कले 8 कटि जीवो तो आंसर इज कमिंग 60/11 फर्स्ट ऑप्शन अछि ऑप्शन तो ये सब थिला वेरियस क्वेश्चंस सब सिमिलर क्वेश्चंस ऑफ मैथ
तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।